Assam Agricultural University on fundraising, including working in policy reforms for various startups, including Atal Innovation Mission. And she has been engaged with the Texas Global, the global commercialization group of University of Texas, and she has led the South Asia Connect program, the Incubator Management Training Program, the Women Entrepreneur Program. She was the mentor to Aspiring Women Entrepreneurs Program of US Department of State, which led to the formation of Association of Women in Business, a network to connect women entrepreneurs and women in leadership positions. So she's an alumni of the US Taiwan GCTF Women Entrepreneurs in Technical Program. She is a project management professional with the qualifications like AmTech in Electronics and Telecom, and her doctoral advisory, she has mentored more than 250 entrepreneurs, primarily on opportunities mapping and techno commercial viability, market access pitching. So she is a native of Delhi with a good avid traveler and also a very good reader. So with all this, I would like to take it over to Ms. Divya ma'am. But before we begin the session, I would request all the participants to keep your mics mute and your video footage off so that we can, you know, conduct the session more smoothly. And for any queries, you can use the chat options. So I feel that it's over to you, ma'am. A very warm welcome to you. Thank you for your time. So please, you may begin now. Right. Thank you so much, Leena, and thank you for inviting me over. Thank you, Abhishek, and thank you also to your management. I think it's a great initiative to organize online lecture series during current times. I don't know how your students are taking this whole initiative, but I guess lockdown or any kind of a crisis time is a good period to sit back, plan, and maybe relook at your own life philosophies as well as future strategies. So I was given to understand that I'll be interacting with students of two batches. If I'm not wrong, primarily master's students. Master's design students as well. Yeah, so it's master's. So this is MBA and design students. So I have tried to put together a little presentation for you all. We'll keep it interactive. I mean, I'm sure you have good professors who can give you nice sessions otherwise. I mean, theoretical sessions otherwise. So we'll keep this a little interactive. We'll do some exercises as we proceed. At all times, please keep your microphones muted unless asked to unmute and talk. So that is where we'll do these exercises. So after you've completed a particular exercise, that's also the time when you can unmute your mic and talk to me. And of course, everybody else among yourselves if you want. So I'll start with my screen share. Just allow me 30 seconds to put it up. Oh, sure. I hope you can see the screen now. Yes, ma'am, it's visible. Yes, yeah. So somehow I think most of us, we've loved this advertisement of idea, which said an idea can change your life. And that always set me thinking, how can I change my life, or how can the ideas can change somebody else's life, right? But that's a fact. It all begins with an idea. It all begins with a small idea. So what we'll do is now we'll start with a small exercise so that I can get to hear the lovely voices of the participants, except for Leena and me just doing the monologue here. So we'll start with an exercise here. So what I want you to do is imagine that you see a beggar on the road and you realize that you've forgotten your wallet at home. You still want to help him, just that you don't have money. So what would you do?
So this is a particular situation, and I'm sure you would see a lot of beggars now on roads. So a lot of ladies carrying kids and otherwise, or even men requesting for money or requesting for grocery, requesting for food because of the lockdown, especially the daily wages, right? And but then you've stepped out to market and you don't have a wallet at home. You just gone for a general walk, right? You want to help this person, but you don't have money. So the only thing you don't have is money. So the situation for you is, and you want to help, of course. So what would you do? So all those, I mean, I'm giving you 1 minute to think about the situation, think about an answer. You want to put it down somewhere, you can do that. And then you can, one by one, unmute your mic and talk to us. Take That'll one. be. Yeah. So I hope you, all of you, your time starts now, right? So that we can begin with it. And can I answer? Sure, please start. Whoever is done, you can start. Okay. Ma'am, I give him the address of government operated shelter homes where he can find some room for and food. Okay. Others, what about others? Good evening, ma'am. Myself Ashutosh Pratap Singh, faculty at Management Department, UPIT Noida. Ma'am, as you have said that I have for evening walk. Suppose if my house is nearby, then I can take him to my house and give him some biscuits and other things to eat him. Right. So you're the kind person, so you want to use your own resources and help this person. Good. What about others? Anyone else? Ma'am, I would like to add here, Abhishek. So probably if that person is selling something interesting, maybe if they're selling craft oriented things or something, maybe, and if I'm carrying my mobile, either I can help through the mobile wallet, like we're doing nowadays, or what I can do is I'll make a story of their life and probably I can post it on social media. So I think that was a trend which also happened earlier. Sometimes I saw that. So maybe their stories can reach out to multiple audience, and when they are going through that area, probably they can reach out to that particular vendor and maybe buy stuff and help that person. Right. That's interesting, Abhishek. Thank you so much. What about others? Anyone else? Right, not a problem. So I have a little video. Let's see what Mr. Bean decides to do. Sure. So you all know Mr. Bean, I'm sure. Of course, everyone might have seen it. Video is. And the video is not visible, so we can hear audio, but the video part is not there. Just a minute. Okay. I'll do the screen share again. Okay, just wait.
with us. Yeah. Thoughts? कहाँ चलना है? तो आपको ये बताना है कि ये वीडियो से आपको क्या समझ में आया? Nice video, everyone. Just respond. What do you understand from it? You can unmute your mic for answering. मैम जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका फुल यूटिलाइजेशन करना. राइट. और be creative in anything. राइट. गुड. और मैम हमारी जो प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट हुई है, हमारे पास वॉलेट नहीं है, तो हम कैसे उसे सॉल्व करें, उसका एक आइडिया लगा. ओके. गुड. एंड और बताओ, थोड़ा बात करो. ऐसे तो नहीं चलेगा. कैसे, मतलब 5:30 बजे तक तो मैं बोर हो जाऊंगी, तुम्हारा पता नहीं. हाँ. His creativity. हाँ. पार्डन. I just joined late. Sorry, may I know the question? Yeah, so we just saw a video जिसमें मिस्टर बीन थे, एंड मिस्टर बीन देखते हैं कि एक कोई ब्लाइंड आदमी है जो म्यूजिक प्ले कर रहा है, राइट? और वो उसकी मदद करना चाहते हैं. ठीक है. वो अपनी जेब से पैसे निकाल के मदद नहीं करना चाहते हैं. Okay. ठीक है. अब उसके लिए what he did was he started dancing next to this person. ठीक है. तो हम लोग अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये वीडियो देख के हमें क्या समझ में आया. Okay. Anything else? So what happened here was the person did not use his own resources, which is different, right? तो एक तरीका हमारे पास ये होता है कि हम अपना सामान उसको दे दें जिसको हमारी मदद की जरूरत है, और दूसरा तरीका होता है कि हम कुछ कमा लें और कमा के हम उसकी मदद कर दें. So यहाँ पे जो मिस्टर बीन ने किया, यहाँ पे he did not use his own resource. उन्होंने अपनी जेब में से $1 बिल निकाल के नहीं दिया, राइट? और उन्होंने उसकी जगह he chose to rather use his skill, मतलब जो उनकी अपनी पर्सनल स्किल थी, he danced a bit, ठीक है, और अपनी स्किल यूज करके उन्होंने उस आदमी के लिए पैसे कमा के उसको दिया. ठीक है. This is what was different in this video, and this was the theme of the video. Okay, so I will start with the screen share again. I'll give you a picture now, right? And what I like you people to do is tell me what you see here. What do you see here? A commando. You see a commando. मुझे ये समझाओ कि ये कमांडो के पास इतने सारे वेपन्स क्यों होते हैं? शील्ड में प्रोटेक्ट करने के क्या दिख रहा है? It's like reserve. If one is not working, try another. Right. Good thought. Very good thought. So क्या दिख रहा है? What all can you see? Guns, backpack, gun, helmet, हाँ, eye gear, सूट दिख रहा है, बैग दिख रहा है,
आई केयर हेलमेट आई गियर दिख रहा है, और मास्क दिख रहा है, मास्क दिख रहा है, गुड, और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ग्लव्स, ग्लव्स। ये बैकपैक में पार्ले जी के बिस्किट और हेल्थ पानी किट हो सकती है, हाँ, हेल्थ किट हो सकती है, किट हो सकती है। मुझे लगता है पार्ले जी की बिस्किट, ग्लूकोज बिस्किट और या मैम बॉटल भी हो सकती है। और क्या हो सकता है इसके पास? Some medicines. मेडिकिट हो मैप, सकती है, मेडिसिन मैप्स हो सकते हैं, राइट, मैम एंड Bullets. बुलेट्स, ओके, गुड, एंड ग्रेनेड, राइट, GPS, जीपीएस। तो ये इतना सारा सामान किस लिए होता है? एक आंसर तो मेरे पास बहुत अच्छा आया, और एनी अदर थॉट्स? मुझको खाली लग रहा है बैग, हाँ, मुझको खाली लग रहा ही नहीं है इसमें बैग में कुछ है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। वो तो मैंने ऐसी कहानी बनाई कि इसमें बिस्किट और पानी की बोतल होगी। तुम ठीक हाँ कह रहे हो, खाली लग रहा है, मुझे भी खाली लगता है इसका बैग। और बताओ, सभी को ही खाली लग रहा था, है ना, खाली लग रहा था, ठीक बात है। और Ma'am, a commando can face any kind of situation anytime, so it will be better be prepared. राइट, तो तुम्हें नहीं लगता हमारी लाइफ भी ऐसी सी ही होती है कुछ? Yes, definitely. Given the current lockdown situation, I think neither our parents were ready for it, nor our grandparents were ready for it, nor we are ready for it, nor our kids are ready for it. What do you think? आज की डेट में हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं हो रखी है। yeah, No, no one was ready for it. yeah. हमें ये भी नहीं पता कि हम मार्केट में सामान लेने जा रहे हैं तो जो हमारे साथ में खड़ा होके खरीद रहा है उसको तो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, राइट? सो you know, a commando by training prepared to face the uncertainties. Am I making sense here? yes ma'am, yes ma'am, So what the commando is being prepared for is only to face uncertainties. मतलब लड़ाई तो वो बाद में करेगा, पहले खुद को बचा ले। तो सेम हमारा, चाहे हमें ऐसे वाले वॉर जोन में नहीं जाना जिस तरह की वॉर जोन में कमांडोज जाते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर वो एनिमी आपकी ही मेन टेरिटरी में आ जाए, ठीक है, यू विल ऑल्सो हैव टू बी प्रिपेयर्ड. So same is the situation for each of us as of today. We will have to have multiple weapons to guard ourselves, our families, our communities, and everybody, right? Now we'll do thodi gyan ki baatein. So as you know, there are 3 types of personalities. Somebody who's technical. How many of you have a technology degree? BTech hai aap mein se koi? Yes. yes ma'am. So couple of you are BTech, I'm sure, right? So yes ma'am, yeah. So what happens with people who have technical skills, okay, and this personality has nothing to do with the degree you acquire. इसका आपकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये आपका एक स्किल सेट है. सो अगर आप टेक्निकल स्किल सेट वाले हैं तो आप अपने काम से अलग नहीं हो सकते. अगर आप मैनेजरियल हैं तो आप कितना काम दूसरे से करवा सकते हैं उससे जाने जाते हैं. अगर आप एंटरप्रेन्योरियल हैं, ठीक है, तो आप हमेशा एक आइडिया लेके और उस आइडिया का क्या कर सकते हैं, आप हमेशा you always wonder that what can you do and how you can do or why do you do it, ठीक है. सो ये क्वेश्चंस आप हमेशा सॉल्व करते रहते हैं. Then you're also known by, when you're a technical, you're known by the quantity of work, ठीक है. तुमने सुना होगा बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो 18 घंटे काम करते हैं, मतलब ओवर टाइम के बाद भी ओवर हो जाता है, ठीक है. While somebody who's a little managerial, because वो खुद भी काम करता है और किसी और से भी कराता है, they are relatively more organized. While an entrepreneur, somebody who's entrepreneurial,
कैन मेक प्लान्स, ठीक है, वो अपने आइडिया के अराउंड ही काम करते हैं, वो अपने आइडिया के अराउंड ही प्लानिंग करते हैं, ठीक है। जो टेक्निकल होते हैं दे मे नॉट लाइक टू वर्क अंडर टारगेट्स, जो मैनेजरियल होते हैं वो टारगेट सेट करके काम करते हैं, ठीक है, मतलब उनको उनके रेवेन्यू टारगेट्स भी होते हैं, उनके नंबर टारगेट्स भी होते हैं, उनको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमने क्या अचीव करना है, ठीक है। और यही जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका काम होता है रिसोर्सेज इकट्ठा करना, ठीक है, टीम सेटअप करना। इसीलिए जो आपकी जो कोर मैनेजमेंट होगी आपकी यूनिवर्सिटी की या आपके इंस्टीट्यूशन की, दे आर मोर एंटरप्रेन्योरियल इन नेचर। मतलब अभी भी कोरोना की वजह से भी इश्यूज आए हैं, तो दे हैवंट स्टॉप्ड इंटरैक्टिंग विद यू स्टूडेंट्स, दे आर मेकिंग श्योर कि इधर उधर से कहीं ना कहीं से एक्सपर्ट्स बुला के आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ सेशन कराए जाएं, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, ठीक है। टेक्निकल के साथ एक छोटा सा इशू आता है विच इज कि दे ऑलवेज फील ओवरवर्क्ड। उनको ऐसा लगता है मैंने अरे इतना काम किया, ये कभी खत्म नहीं हो रहा है, ये कि मैं क्या करता जा रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। सो इट्स मोस्टली दे फील ओवरवर्क्ड और फिर भी काम खत्म नहीं होता है, सो दे हैव टू कीप डूइंग, and this is because they do it by themselves, okay. While somebody who's in managerial personality, they can still get their work completed, वो X भी manage करेंगे और वो Y भी manage करेंगे, ठीक है। they'll try and manage friends, social networks, they'll manage families, they'll manage work, they'll try and do everything. Entrepreneurial में they'll be required to bear the ultimate loss or ultimate rewards, ठीक है। So it's extreme for entrepreneurs, and that's what I'm trying to prepare here for you people, so that you understand कि ये 3 categories होती हैं, and again there's nothing right or wrong about it, सब अपने आप में experts हैं, ठीक है। So इसमें कुछ सही और गलत नहीं है। Now we come to ways of doing business, okay. So these are few identified ways of doing business. Somebody could be self-employed, okay. So a professional who decides to get a job by himself or become his own boss. So you know, you see lot of these तुमने कभी इसको देखा है, रिक्शा वाले को देखा है? As simple example देती हूँ। So रिक्शा वाला जो होता है, मतलब तुम उसके पास जाओगे, अगर वो रेस्ट कर रहा है वो तुम्हें रिफ्यूज कर देगा, वो लिटरली तुम्हें ये बोलेगा नहीं मुझे नहीं जाना, ठीक है। दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यू गो टू अ शॉप, उसके पास सामान पड़ा भी होगा, लेकिन अगर उसको उठ के नहीं जाना लेने के आपको देने के लिए, तो वो भी कह देगा नहीं भैया आज सामान खत्म हो गया, ठीक है। that's somebody who's typically self employed, so they become their own boss. एंड मोस्टली जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जरूरी नहीं है उनके अंडर बहुत सारे लोग हों, मतलब थोड़े बहुत उनके पास हेल्पर्स हो सकते हैं, बट दे डोंट हैव टीम्स टू स्केल अप। दैट्स वन फंडामेंटल डिफरेंस, ठीक है। देन देयर इज अ बिजनेसमैन। सो द बिजनेसमैन टिपिकली वर्क्स ऑन द बिजनेस एंड नॉट इनसाइड द बिजनेस, मतलब वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करता है बिजनेस का, ठीक है। एंड दे build systems which can run without them, ठीक है। तो मतलब अगर वो बिजनेसमैन नहीं है या काम पे नहीं आ पा रहा है, तो भी उसके बिना बिजनेस रुकेगा नहीं, मतलब उसका वो काम रुकेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि it is more commanded by planning and analytics. They are also able to bring predictability, मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया ना मैनेजरियल, दे वर्क इन टारगेट्स। सो अगर एक बिजनेस है तो उसमें आप बिजनेस की ग्रोथ प्रिडिक्ट कर सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड में ये सब कुछ नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा सीजनल हो सकती हैं चीजें, ठीक है। एंड देन ऑल्सो द बिजनेसमैन कैन गिव एविडेंस ऑफ सक्सेस ऑफ हिज सिस्टम्स, मतलब जो उसने सिस्टम्स डाले हैं ना अपने बिजनेस में, उसका वो एविडेंस भी दिखा सकता है कि देखो ये मेरा काम ऐसे चलता है, ये देखो ये मैंने करा तो इसका ये रिजल्ट आया है, इतने लोगों को मैं रीच कर पाया हूँ, ठीक है। कैन यू नेम few of these businesses which come to your mind while we are discussing now? Anybody, you can unmute your mic and talk.
any name, any business which comes to your mind जो या any businessman which comes to your mind जो ये सब चीजें fulfill करता है आपके हिसाब से? Somebody who works in the on the business, जिसने systems बनाए हैं, जो predictability बता सकता है, जो रतन टाटा. Ratan Tata, right, very good example. More? Anybody else? जियो मैम, अंबानी, बिल्कुल. Ma'am, can we put angel investor in this category? तो बेटा इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, है ना. इन्वेस्टर अगर खुद पे बिजनेसमैन रहा होगा तो आप कैटेगरी में डाल सकते हैं. ओके. लेकिन इन्वेस्टर वो होगा जो इन्वेस्ट करेगा, पैसा डालेगा. नहीं, वो स्ट्रेटेजी और ये सारी प्लानिंग तो करते हैं ना दूसरे बिजनेस के लिए भी. स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करते हैं, लेकिन हाँ वैसे डाल सकते हैं. ठीक कह रहे हो. मतलब now that I'm thinking louder, I think you're right. You makes sense because वो पूरी प्लानिंग भी करते हैं वो. लेकिन पता है एक छोटा सा हिच है, वो ये है कि उनका रिस्क बहुत हाई होता है. ठीक है. इन्वेस्टर का रिस्क बहुत हाई होता है, वो रिस्क पे बेट करते हैं. मतलब जो वो पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो रिस्क पे इन्वेस्ट करते हैं. ये डिफरेंस है एक थोड़ा सा. ठीक है. तो उसको हम बिजनेस, अब जैसे आपके ये है मतलब आपका हीरो ग्रुप है मुंजाल. अभी रतन टाटा का नाम लिया आपने, फिर महिंद्रा, आनंद महिंद्रा. सो दीज आर टिपिकली बिजनेसमैन. ठीक है. मतलब उनके पास टाइम होता है, वो सुबह बैठते हैं, उठ के ट्वीट भी करते हैं. आप कभी कभी उनके ट्वीट्स भी आप पढ़ते होंगे या कभी वायरल हो जाते हैं तो आ जाते होंगे सामने. ठीक है. मतलब they have time because they've worked on the business. They've created systems which can run even when they're not there. ठीक है. मतलब उनको सुबह सुबह जाके शटर नहीं खोलना दुकान का. Next we come to the entrepreneur. So entrepreneur basically क्या करता है, वो एक प्रोटोटाइप बनाता है, उसको रेप्लिकेट करता है, उसको मल्टीप्लाई करता है, और उस प्रोसेस में वो न्यू जॉब्स क्रिएट करता है और नया इम्पैक्ट क्रिएट करता है. ठीक है. क्लासिक एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल है ये. मतलब क्लासिक एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, फिर सीरियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. जो सीरियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो मल्टीपल बिजनेसेस रन करते हैं. ठीक है. मतलब वो एक बिजनेस शुरू करते हैं, टीम सेटअप करते हैं, या तो उसको बेच देते हैं या फिर उसको चलाते रहते हैं. कैन यू नेम अ सीरियल एंटरप्रेन्योर? कोई याद आ रहा है? मैम रतन टाटा ही है, वो कई सारी चलाते हैं, मतलब कई सारी इंडस्ट्रीज. पर देखो बेटा, रतन टाटा थोड़े से डिफरेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने टाटा ग्रुप नहीं सेटअप किया था. ओके. मतलब उनकी लाइफ टाइम में उन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस तो सेटअप किए होंगे, बट उनको एक लेगेसी मिली थी. ठीक है. जो कि ऑलरेडी उनके पास आई थी जब मतलब उनके सीनियर्स जो हैं उन्होंने टाटा ग्रुप सेटअप किया था. फेसबुक ने फेसबुक के अलावा क्या किया? मार्क जुकरबर्ग ने उसके अलावा क्या किया? मैम वो उनके हिसाब से हार्वर्ड में तो मैम वो पहले भी कई बार कुछ कर चुके हैं. पहले फेस मैचिंग भी किया था. उनकी एक मूवी देखा था, उसमें पता चला था. और भी बहुत कुछ थे, मैम याद नहीं आ रहा है. अभी स्टेट पे जो है मार्क जुकरबर्ग, ही इज एक्चुअली अ क्लासिक. How about Elon Musk? हाँ जी. Elon Musk. Right. Elon Musk. आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है. Have you people heard of somebody called Richard Branson? Richard Branson. Have you heard of Virginia? Virgin Airlines. Yes. Right. He's one of the very successful serial entrepreneurs. Ma'am, but in other hand, he is also a investor who invests
की करते हैं अधिकतर। इन्वेस्ट तो कोई भी कर सकता है ना, वो तो तुम और मैं बैठेंगे जब अगली बार तो हम ही कर लेंगे दोनों, कोई टेंशन नहीं है। इन्वेस्टर इज नॉट अ ट्रबल। इन्वेस्ट करना इज, हाँ इट्स एन आर्ट, आई अग्री। ठीक है, वो जब आपको बिजनेस के गुण पता लग जाते हैं और आप समझ पाते हैं कि कैसे प्रिडिक्ट करना है ग्रोथ को, तो आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, है ना। एंटरप्रेन्योर होता है, फिर से पहली वाला पैराग्राफ पढ़ो, विच सेज कि बिल्ड्स अ प्रोटोटाइप। ठीक है, सबसे पहले कुछ क्रिएट करते हैं और वो इनोवेटिव होना चाहिए। ठीक है, जो कि रेप्लिकेट हो सके, मतलब उसको आप बहुत सारी ज्योग्राफीज में ले जा सकें, या बहुत सारी उसके मास स्केलिंग हो सके, या मास प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर सकें और बहुत सारे लोगों को आप जॉब दे सकें और उसका कुछ इम्पैक्ट हो। सो वो है एक एंटरप्रेन्योर। Can somebody tell me, talk to me about Uber? How do you see Uber or Amazon? मुझे ये बताओ कि what problem do you think Uber or Amazon solved? Uber की जो cabs हैं, उन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की थी? ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड किया किसको? They don't own any vehicles, but still they have a fleet of vehicles which is not owned by them. Good, but that's their business model. I'm only asking right now, what problem did they solve? Commutation issues. Commutation issues, yes, very good. Or transportation, city transportation. City transportation मतलब एक तरफ तो there was customer या जो भी कम्यूट करना चाहता था, ठीक है, लेकिन उसको कैब नहीं मिलती थी। और एक तरफ कैब के जो, तुम्हें याद होगा कैब के पहले स्टैंड्स होते थे, टैक्सी स्टैंड बोलते थे हम उसको। टैक्सी स्टैंड। हाँ, तो टैक्सी स्टैंड पे टैक्सीज खाली खड़ी रहती थी, बिकॉज वो लोग जाते नहीं थे, वो ट्रैवल नहीं करते थे, है ना। उनके अपने रेट होते थे, वो उनको शॉर्ट डिस्टेंस नहीं जाना होता था। और कैब्स इस तरह से डेमोक्रेटाइज्ड नहीं थी जैसे आज है, कि मतलब आप एक मतलब 3 स्टेप्स में यू कैन एक्चुअली ऑर्डर अ कैब टुडे, है ना। और किसी भी छोटे से छोटे डिस्टेंस या बड़े से बड़े डिस्टेंस आप ट्रैवल कर सकते हैं, एटलीस्ट सिटी लिमिट्स में तो कर ही सकते हैं आराम से, और आउट स्टेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, सो उन्होंने ये ब्रिज किया, and that's their business model. Absolutely, you're right कि they don't own a single cab, so that's their business model. They wanted to remain asset light, which is a great thought. ठीक है, लेकिन आप फिर भी देखेंगे तो they've been able to provide a lot of jobs. So I have even met educated, rather graduate level के cab drivers से तो मैं मिली हूँ। I have even met students driving cabs शाम के समय या late evening में, because they feel it pays for their pocket money. Nothing wrong about it. Next we come to Amazon. What problem do you think Amazon solved? Amazon से खरीदते होगे ना तुम लोग, कुछ ना कुछ तो लेते होगे कभी? Yes, sir. They brought the whole market into the doorstep. Right. And how did they do it? Over the digital mobile phone apps. Again through digital, because mobile became such an important device कि जब मोबाइल आपके हाथ में आया तो it became a very important device, है ना। So जो Amazon की app है, by click of the app, again 3, 4 or maybe maximum 5 steps you can select your product, ठीक है, and you can get it delivered. And then came their policies कि 1 week में return, Amazon के reviews. So जब आप reviews पढ़ते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये product और जिन लोगों ने use किया है उनके क्या reviews हैं. So that gives you a particular confidence कि नहीं, मुझे ये product पसंद है, ठीक है। So Amazon ने product reviews के through अपना जो एक confidence create किया है user में और या customer में, ठीक है। And then of course they have
quick delivery, they have other policies and so on and so forth. तो discounts देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. So again, they have multiple models by which they work. ठीक है? So these are few examples of how these entrepreneurs solve problems. Okay. Then there is another very interesting category, which is an entrepreneur. So जरूरी नहीं होता कि आप सारे करियर को लात मार दें और आप ये बोलें कि नहीं मुझे तो अपना कुछ करना है, ठीक है? But you can at the same time display entrepreneurial traits within the organization as well. मतलब अभी if I see for example Leena and Abhishek, for me these are entrepreneurs. So one of them reached out to me कि हम लोग ऐसे अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सेशन कर रहे हैं, ठीक है, would you like to come? So I didn't knew either of them, ठीक है? So but then within the organization also they exhibited these traits, ठीक है? So these people are called entrepreneurs. Organization में रह के ही organization के भले के लिए they leave their comfort zones and perform beyond that. Now we'll do exercise 2, and I want you to write this down somewhere, and then we'll have a discussion or we'll talk about it. Ki what kind of a personality are you, right? So can you solve a problem? These are 2 questions actually, which I want you to do here in this exercise. 1, what kind of a personality are you? So we'll refer here to personalities. And again, I'm saying there's nothing right or wrong. It's only that you should know about yourself. हमें पता होना चाहिए. जैसे मैं आज से मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैं टेक्निकल थी. मैं अपना काम करती रहती थी, मुझे बहुत मजा आता था और मैं मुझे लगता था कि मतलब खत्म हो या ना हो, काम होता रहना चाहिए, एंड मैं बहुत सारा काम करती थी, ठीक है? और मुझे किसी और का काम भी पसंद नहीं आता था, to be very honest. Gradually I shifted towards managerial, ठीक है? Where I started because I had to build a team. मैं सब कुछ खुद नहीं कर सकती थी, तो मैंने लोगों को काम देना शुरू किया, मैंने उसको ग्रो किया, ठीक है? So वो उसमें टाइम लगा, मेरा ट्रांजिशन हुआ. आप लोग अपनी लाइफ के जिस स्टेज में हैं, आप you come with some inherent skill sets. So today I want you to identify your own skill sets and tell me कि आप कौन सी टाइप की पर्सनालिटी है. Are you a technical, managerial, entrepreneurial? And again I'm repeating, there's nothing right or wrong about it. आप कुछ भी हो सकते हैं इन तीनों में से, और तीनों अच्छा है, मतलब बट हाँ आप पहचान लीजिए अपने आप को. So हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे we'll proceed, ठीक है? And then can you also solve a problem? So this is something you have to think about it. So I'll give you 5 minutes to do this exercise. So can you solve a problem to make a living or a career? Is there a problem around you which you think you can solve? So I leave here. We're sitting at 16:42. I'll allow you people 5 minutes. After 5 minutes, whoever is done can unmute the mic and talk to us.
Tina, you can go back to the previous slide, please. Is it okay, ma'am? This one, right? Right. Thank you. Anybody who's done can unmute the mic and talk to us. Hi, I can respond first. I'm a kind of technical plus managerial ability, which is a blend which is coming to my current career situation. And to this point, to the second, yes, I can solve a problem for a living or a career. But right now, I'm solving the problem for the others. Would you like to share with us? I mean, how are you doing it? See, What you're doing? Yeah. Yeah, usually I get a technical problems or a problems related to either technical or a usability, which will come to as a projects to us. We do understand what is the issues and concern, who are the stakeholders. So we do a complete analysis of the activity, and then start working towards as a project to solve those issues. That's interesting. So do you get paid for it? Yes. Okay, good. So anybody else? Yes, ma'am. I am. I'm sorry, I'm unable to hear. Hello, ma'am. Please come up again, Hemant. Yeah. Sure. Yeah. Now you're audible. Okay. Ma'am, my previous personality is techno managerial, where I can work as an engineer but manage some other subcontractors. But at
at present I am shifting there for entrepreneurship. Okay, and what do you want to do when you become an entrepreneur? I'm trying to solve the local problems where ये क्या बोल मैंने जहाँ पे ये लोकल जो होते हैं ना जिनके पास अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई है, मैं उनके पास टेक्नोलॉजी पहुंचाने का काम करना चाह रहा हूँ. थोड़ा सा समझाएंगे क्या, मतलब बिकॉज डिजिटल इंक्लूजन या टेक्नोलॉजी इंक्लूजन या टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इज अ बिग फील्ड. तो अगर आप मतलब अगर आपका कुछ नॉन कॉन्फिडेंशियल है तो क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं, आप क्या करेंगे या क्या करते हैं या क्या करना चाह रहे हैं? जी प्लीज. ओके मैम मैं ये चाह रहा हूँ जो लोकल जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है ना, जो हमारे जो ये नुक्कड़ शॉप जो होती हैं, इनके पास डिजिटली कोई प्लेटफॉर्म नहीं है. मैं इन्हें डिजिटली प्लेटफॉर्म कोई प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. और उससे वो क्या कर सकेंगे? उससे ना वो जैसे कोई बार्बर शॉप है ना, वो उसके पास क्लाइंट्स तो आते हैं लेकिन वो वेट करते हैं अपना टर्न्स आने के लिए. मैं उन क्लाइंट्स को और उस बार्बर को ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना चाह रहा हूँ जहाँ पे वो बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन आने से पहले ही. ओके, इंटरेस्टिंग. थैंक यू. एनीबडी एल्स? Anyone else? See, apart from me, there are 28 participants in this call today or in this session today. तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 या 3 के अलावा किसी को नहीं पता चला हो कि वो कैसी पर्सनालिटी हैं और वो क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो बात तो करनी पड़ेगी, है ना. अब सेशन में आए हो तो बात तो कर ही लो. तो इसलिए अनम्यूट करो अपना माइक और बताओ हमें. देखो हम वीडियो नहीं ऑन करा रहे हैं, मतलब हमें ये नहीं देखना कि तुमने टी शर्ट पहनी है कि Right, you have platform to speak up your mind. You can. No, yeah, let's talk. नहीं तो ऐसा लगेगा बस मैं और लीना ही बात कर रहे हैं सिर्फ. So let's talk. And student, one more thing. You are not going to come online. I mean, the ma'am is not seeing your face. Maybe अगर आपको सामने बोलने में hesitation हो, this is the offline. आपका face offline है. You can speak whatever you want to speak. जो भी बोलना चाहो, you can speak. There are so many students were in class. They wanted to be entrepreneur. So this is the right time you can talk to ma'am. You can have your all queries sorted out over here. Well, ma'am, I think I'm a managerial and entrepreneurial person because I always wanted to do a business. But maybe this is the time that I have passed my so many years and I am not succeeded to take risk. But I think I'm entrepreneur. Always I think about business, how to do the business. In fact, I have helped my one of my relative in set up in her business, boutique business. Wow, interesting, very interesting. Yeah. So what do you want to solve? I mean, is there a problem you've ever identified you think you want to solve? Around that time, she was not able to find the right place. So where should I open it? So we were search market entire week. What is the prominent place which is cheap and best? Because when you are going to start a business, you are not having a heavy budget. So you have to find a place which is in the front of the people as well as it is less costly. So we work on that, and then we find a shop. It was already a boutique, and it was stopped due to shifting of the people. They were shifted in Gujarat. We talked them, and we got the shop.
and now she's doing good because people already know it's a boutique place. Right, that's interesting. So you helped somebody set up, or a friend of yours or cousin of yours set up her own facility. Other That's thing, nice. I also help her to enroll with the MSB classes. Usha is teaching. I mean, they are teaching people to how to be to learn updated stitching style and all that. I went with her and enroll her. So I help her in setting up the business. I think that's about her. My question was, if you have to take a risk in your life, right, which is to solve a problem, what would what would that risk be? What would you like to do? I would like to do something with green, I mean, in organic food market. Very interesting. Yeah, that's definitely trending right now. Yeah. And I'm seeing and being in surveys, so many surveys I've done, a small survey I have done, online survey. So I find the people are not able to find this goods because it is only available online. I mean, in retail shop, it is very less available. So I found I want to do something on that area. So how can be it is possible to more availability of organic goods to the people? Right, that's interesting. Good. Anybody else? Thank you. I would like to add my point of view. So, Abhishek here. Yeah, So in my brief stint of my career up till now, so I started with more of a technical person, like you mentioned. So I was working at Infosys, and I could relate to that fact that one feels very overloaded with the work. So after that, after 3-4 years, then I started my journey of entrepreneurship. So I opened up a design firm where we wanted to solve a problem of waste. So we started this startup called Vilava, where we were utilizing waste wood materials and tires, and we were making a furniture range out of it. So we were able to carry that's out upcycling. Yeah, that's right, interesting. exactly Yeah. upcycling. So we carried out till 1 year or so, but then there were many issues with the ecosystem, like the perception about upcycling. It's a waste material, so we exhibited our stuff at many platforms, and then there we felt that this perception of how waste is being used in a different way, that perception of waste is not getting lost when the people are seeing the products. So probably the ecosystem was not ready enough to accept that as a mainstream product. And so after that I proceeded, and then I came into this journey of educator. And so that was a brief period where I could experience those aspects there. But then I also realized the importance of a big team. So we were two of us who were running that studio, but then you need a person in marketing. You need somebody who would run around. So that team building was very much required. I think that we missed on when we were doing that. Yeah, no, good you realized it early in your life or career stage, because it helps to know. So whenever next time you'll like to create your own venture, you'll be better prepared. Yeah, okay, right. so that's I think it's good to start at least, and I won't say fail, but at least try and not get success as you had thought. Okay, so there's a difference between failing and not getting ample success. Okay, these are completely two different things. You've not been successful, which is fine. I mean, you at least tried. Okay, and next time when you like to build another venture, you'll be better prepared. So that's something I can definitely tell you. So I think congratulations, you tried, which is a great thing. Thank you. I think I'm currently enjoying my journey as an entrepreneur. Yeah, definitely. Why not? So it's so important, because even established organizations require entrepreneurs. Otherwise, I mean, I'm sure you've seen a lot of our PSUs get disinvested, or they
after they reach a maturity stage, and if they don't innovate or they don't adopt technology to reach to the next level, then most of them actually become sick units. And I think that's where we require a lot of entrepreneurs. So entrepreneurship, as we talk to people or talk to students, it's not only ki we'll force you to become an entrepreneur. It's also more about a mindset to solve a problem and a mindset to bring change, rather than saying कि ऐसा ही होता है. मतलब we always wait कि कोई हमारे लिए कुछ ठीक कर देगा, है ना? So वो कोई कभी नहीं आता. I mean, there's no koi which is going to come and solve problems for us. We have to do it ourselves. I mean, that's how I treat it. Right. So thank you. I think we had good discussions. Enough gyan from my side. What we'll do is, Lena, I'll request you to the next slide, and please play the presentation for play the video for all of us. Is it visible? The video part? Yes, we can see the screen. Okay, fine. Yeah, we can see the screen. You can make it on full screen mode if you want and play it. The music is low, so you can check the settings there.
Right. Thank you, Leena. Thank you for sharing that with us. Okay. So we can proceed to the next slide. Yeah, sure. So that's an entrepreneurship video by Intel. If you'd like to watch it again, please go ahead and do that. One of the very fine videos which gives you a lot of statistics and numbers as well. Right. So I understand you all have been exposed to the wonderful world of entrepreneurship. As your faculty said, some of you also want to become entrepreneurs. There are few definitions of entrepreneurship. I've shared this presentation with your faculty. You can go through this again if you like. However, the one I like the most is the third one, which is the art of surviving till you get lucky. So that's also true for you, Abhishek. That's also true for me, right? So we have to learn the art of survival till we are able to call Eureka, right? Until we get lucky and we say that, yes, this is the big bang for us. So again, Peter Drucker, he has a lot of things to share with us, right? It's not magic, it's not mysterious, it has nothing to do with genes. So it's discipline, and like any discipline, it can be learned. So I think most of these are very interesting definitions, and that's what it allows us to pursue opportunities without regard to the resources that we currently control. Because entrepreneurs believe that they can always generate resources. They also believe that if they don't have the right skill set, they can hire people with the right skill set. So it's more about a mindset than about you being a ready entrepreneur by birth, right? Go to the next slide, please. Right, so these are the various stages of, no, you can just put it on full screen if possible. Right, so it starts with an idea. So an entrepreneur majorly starts with an idea. So if you see at the bottom, there's one of you or one of us, right, who's got some passions and some idea, who's very interested to inspire and then celebrate, right? The green one, if you can see at the bottom, right, is creative, innovative, and then there are programs which help them fulfill their passions, right? And then it has to be a very, very selected decision to become an entrepreneur, so that you can then advance to the next step. And once you have been amply inspired and you know what you're wanting to do, you work on it. So you say that let's discover the programs, let's discover other networks, and also see how we can build communities and we can build interest groups, right? So it's mostly about connecting to other startups and other entrepreneurship networks. And that's the time you've decided that you want to become an entrepreneur. Thereafter, you plan, you get into execution stage, and that's when you've decided that, okay, not decided, that's where you've become an entrepreneur, okay? And it's more about now creating network, idea generation, refining that idea, market validation, and most importantly, co-founder dating, right? So if you are the one who's there to become an entrepreneur, you have to look at good co-founders to work with you, okay? And that's always recommended.
So look at people who have complementary skill sets. So if one of you is a technical person, look for the other one who's good at relationship building and marketing, right? That's always suggested, that you look for complementary skill sets in your co-founders. Thereafter, you become a startup. You have a team in place. As small a team, don't worry about it. A small team is mostly high-powered team, right? And an idea in search of a business model. That's where you work on that business model. जैसे Uber का था कि वो एक भी गाड़ी own नहीं करते हैं. That's their business model. They chose to remain asset light, you know. And then we become a more solid team with some good ideas. After that, you plan on scaling up. Now that you have a stable business model, जो आपने कहीं पे validate कर लिया है और आपके पास market traction है, people are paying you for it. ठीक है, मतलब revenues आने शुरू हो गए हैं. Then comes the time for scaling up. So you become a team with proven business model and positive customer validation. Customer validation तब तक नहीं होता है जब तक हम freebies देते हैं. Customer validation तभी होता है जब आपके पास paid customers आ जाते हैं. ठीक है. Then comes high growth. So you have amazing team, you create traction, further traction, and you aim growth. So that's the time you say, now we're taking over the world. So अभी हम लोगों ने चाहे Uber की बात करी हो या Amazon की करी हो या Mark Zuckerberg की करी हो, they all first started from US. Once they knew they were there and they also knew that their product can come to other geographies, was the time when they decided to scale up. Okay, next slide, please. So what are we doing? I mean, तुम लोग बोलोगे कि ये सेशन तो था पावर ऑफ एन आइडिया पे, हम कर क्या रहे हैं? सो हम बेसिकली एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट? सो we'll try and find a pain which coincides with your passion. जैसे अभिषेक ने बोला, they were concerned about tire waste, right? And they thought इसका क्या कर सकते हैं? So Abhishek, I had a entrepreneur from Nepal. You can look up to them. They do premium furniture using tires because उन्होंने ये देखा कि नेपाल इतनी छोटी जगह है, तो टायर्स जिस हिसाब से इकट्ठे हो रहे थे, they thought कि मतलब थोड़े टाइम बाद सिर्फ टायर ही नजर आएंगे. ठीक है. So they decided to get into tire upcycling. And it's called, the company name is called Tire Treasures. You can look up to them, as I said. They've sold some 500 pieces of furniture made only with tires, right? So, but that has to, again, as I said, it has to match with your passion, right? It has to bring you an opportunity by solving a problem, by arranging resources in terms of money and people. So, you know, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता. कभी कभी आप इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे तो इन्वेस्टर आपको ये भी पूछेगा कि क्या सिर्फ पैसे दे दूं तो काम चल जाएगा तुम्हारा? इज मनी द ओनली स्टॉपिंग फैक्टर फॉर यू? सो तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सिर्फ पैसे से ही रुका हुआ है क्या काम, या कोई और भी रीजन है. सो यू हैव टू एक्चुअली देन वर्क ऑन द अदर रिसोर्सेज एज वेल एंड वेरी क्लियरली टेल देम कि क्या क्या और चाहिए हो सकता है. ठीक है. सो which helps you then develop a service or a product as solution, and you get paid for it. Okay? Facing uncertainty and risk in the process with the tenacity and emotional strength to withstand failure and start all over again without losing enthusiasm. So मैंने बोला था ना, वो third definition was the best for me because it simply said it's an art of surviving till you get lucky. Right? So risk भी होगा, uncertainties भी होंगी, ठीक है, emotional strength भी चाहिए होगी, failures भी आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको enthusiasm lose नहीं करना because there are people who are looking up to you. So if you have decided to be the special entrepreneur, believe me, there are people looking up to you. मतलब उनको आपसे उम्मीद है कि क्योंकि आप उतरे हैं तो आप कुछ करके तो दिखाएंगे. Okay. The only catch among all the philosophy of entrepreneurship is how do you make sure
that you come out with a solution that people are ready to pay for it. Because अगर आप उसके लिए आप उससे रेवेन्यू कमा सकते हैं तो आप लोगों को जॉब्स भी दे सकते हैं, आप अपने बिजनेस को स्केल अप भी कर सकते हैं, आप उससे कुछ भी कर सकते हैं. So you have to make sure that whatever problem you're solving, there has to be somebody who's ready to buy it, right? Next slide, please. Okay, so one of my favorite slides, how to start a startup. So this is normally an exercise I do when we do in-person classes. I mean, I do in-person sessions on Power of Idea. We also do boot camps. So that's where we work on this particular slide. If you want, you can do it yourself as well. So what you try and do is you live in future, ahead of your time. Okay, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, and then you see what is missing in the world. Okay, you write it down and then you bounce ideas around, and that's where we do a lot of group exercises. You try and make a prototype to solve a problem. Okay, you show the prototype to 100 people, which could even be internally, it could be even within your college. अपने college में ही दिखा सकते हैं. फिर आप उस prototype पे iterate करते हैं until it makes sense. आप एक co-founder ढूंढने की कोशिश करते हैं. आप अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं और आप अपनी इक्विटी बांट लेते हैं. ठीक है, मतलब अपनी कंपनी के शेयर्स बांट लेते हैं. फिर आप फंडिंग ढूंढते हैं और वर्जन क्रिएट करते हैं. ठीक है, फिर आप उसको लॉन्च करते हैं. मतलब लोगों को तो पता लगना चाहिए ना, अब हम उतर गए हैं मैदान में. ठीक है, फिर उसके बाद हम फॉलो अप्स करते हैं. हम कोशिश करते हैं कि वो जो 100 लोगों को हमने प्रोटोटाइप दिखाया था, उनसे जो हमें फीडबैक आया था, ठीक है, उसके बाद जो हमने अपना प्रोडक्ट बनाया था, तो हम उससे आगे लोगों के पास जाते हैं. हम अपने यूजर्स के साथ फॉलो अप करते हैं. अगर वो फिर से वापस आते हैं, ठीक है, हमारा सामान खरीदने या हमारा सर्विस दोबारा लेने, तो हम फिर और लोगों को पुश करते हैं. दिस इज वेयर मार्केटिंग कम्स इन. ठीक है, और फिर हम ग्रो करते हैं. किसी अपने लिए डिपेंड करता है, हर सेक्टर की अलग ग्रोथ होती है. ठीक है, तो हम सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ को टारगेट करते हैं. ठीक है, एंड वी कीप ग्रोइंग. सो वी लुक एट सम 4-5 years का model for ourselves and we achieve success. However, as you see, there is another area here. Say आपके कस्टमर पहले तो आपका प्रोडक्ट ले गए लॉन्च जब आपने किया, लेकिन वो वापस नहीं आते, वो छोड़ गए आपको. ठीक है, तो उस समय आप उसको दोबारा लॉन्च करते हैं, आप उसको फिर से इटरेट करते हैं. You discuss with people again. So if you can see this, Airbnb launched 3 times. Again, nothing right or wrong about it. It is completely driven by your passion and your art of surviving till you get lucky, right? So that's a very simple startup route. Okay, you keep working on it. लेकिन preferably you try and solve a problem ahead of future. अगर आप सिर्फ आज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आज की प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्या होता है कि अगर वो प्रॉब्लम चली गई तो you cannot have a shorter vision. You have to have a long term vision. विजन हमेशा लॉन्ग टर्म होती है. ठीक है, सो इसलिए हम थोड़ा दूर देखते हैं. अभी जैसे मेरे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स थे who were solving air pollution problems. ठीक है, इनफैक्ट वी वर सपोज टू डू एन एयर पॉल्यूशन हैकेथन आल्सो कैलकाटा में थोड़े टाइम बाद. सो अभी जो करंट सिचुएशन है, एयर पॉल्यूशन इज कंप्लीटली गॉन. आई मीन इट वाज जस्ट एज सिंपल, स्टॉप ऑल ह्यूमन एक्टिविटी. तो मतलब बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम आपका वो प्रोडक्ट हो सकता है जो आपने उस समय डेवलप किया हो 2-3 साल की मेहनत में, वो कोई और प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. ठीक है,
So this is also then the time we tell entrepreneurs, this is also the time for you to look at other market problems, right? And put your equipment which you've created to good use elsewhere. कुछ और problem solve हो सकती है उससे, ठीक है? So that's how we majorly start a startup. Okay, next slide. There is something which is very important which sells, is called value proposition. So I'm sure both the MBA students as well as those in design would understand the importance of value proposition, right? So लोग आपकी सर्विसेज तो यूज करते हैं लेकिन उसको पे नहीं करना चाहते, ठीक है? अगर आप में से कोई ऐसी सिचुएशन में कभी भी आता है तो you will have to relook at your value proposition, ठीक है? If you are able to identify a pain for which the customer is willing to pay to get his problem solved, that's where you've created value for the customer. So revenue important है, और otherwise वो philanthropy हो जाता है, वो business नहीं बनता है ना? वो grants हो जाती हैं, वो philanthropy होती है, ठीक है? So अब वो बड़े लोग करते हैं, मतलब उसमें again nothing right or wrong about it, लोग करते हैं, philanthropy करना भी बुरा नहीं होता है, ठीक है? लेकिन वो sustained नहीं होती है. So थोड़ा सा उसमें ये challenge होता है, मतलब अगर किसी ने उसको बंद कर दिया उस पैसे को देना तो वो philanthropy फिर रुक जाती है, ठीक है? So that's why something which is very critical is the concept of value proposition. You will have to create value for the customer that they are ready to pay for it. Just keep thinking again and again about it. अगर आपका सामान किसी ने खरीद लिया, ठीक है? So you've nailed it. Next slide, please. Okay, so why should you study entrepreneurship? I think that's the last slide, if I'm not wrong. You should study entrepreneurship so that you don't make classic mistakes. You save time. सिर्फ अपना नहीं, अपने employees का भी और अपने co-founders का भी और अपने, अगर तुम अपने घर से पैसे लेके start करते हो तो उनका भी. You also save a lot of money by not pursuing a wrong idea. You could also do, I mean, so this is part of one of our courses. Okay, so you also look at the entrepreneurial journey. जो तुम्हारे को, you're prepared, you're better prepared कि हाँ ये तो होगा ही मेरे साथ. तुम्हें पता होता है कि ये ups and downs तो आएंगे ही, मैं value of death से तो निकलूंगी ही, ठीक है? So that's where I mean that's why it's important to study entrepreneurship, right? So often there have been debates ki can people be made entrepreneurs, and I think yes, they can be made entrepreneurs. So entrepreneurship mindset is one theme, okay? Once you are entrepreneurial in nature, you can anyway learn the art of managing your venture and reach the next level, right? Lena, do we have another slide? Otherwise, I think this is the last one. So this is the last one. Yeah, thank you so much, Lena. So if there are any questions, I'll be happy to answer. Otherwise, we've hit 5:30 and I'm happy that we could complete in time. Yes, students, if in case you have any queries, you can share your queries like that. Does anyone have any query? Anything you wish to ask? हेलो मैम. हाय मैम, मैं वो उसके बारे में जानना चाहता हूँ, फंड रेजिंग के बारे में फॉर स्टार्टअप. ठीक है, बताओ क्या जानना चाहते हो? मतलब मैं फंड रेजिंग कैसे करूंगा उसके लिए? इंक्यूबेशन सेंटर्स हमें ट्रेनिंग देते हैं या फिर फंड रेजिंग में भी हेल्प करते हैं? तो इंक्यूबेटर्स दोनों करते हैं. इंक्यूबेटर फंड रेजिंग में भी हेल्प करते हैं. कुछ इंक्यूबेटर्स के पास अपना सीड फंड भी होता है,
ठीक है। Okay. तो वो आपको, हाँ, वहां से भी आपको अपने सीड फंड से भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब आपको बहुत क्लियरली उनको बताना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आने वाला है, जो मैं रेवेन्यू की बात कर रही थी, है ना। तो Yes. 3-4 मेजर स्टेप्स हैं। वन इज इनोवेशन, ठीक है। मतलब पैसा, इजी पैसा जो मिलता है वो इनोवेशन पे मिलता है। अगर तुम एक और मी टू प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और मी टू प्रॉब्लम सॉल्व करते करते तुम ये एविडेंस दे सको कि मैं बेटर कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मी टू प्रॉब्लम भी, तो भी पैसा मिल जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि उबर के बाद ओला नहीं आई, ठीक है। Okay. ऐसे ही यूएस में उबर के बाद राइड है। सो अगर आप ये भी सजेस्ट कर सकें कि वो मी टू प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन इतनी मार्केट है, ठीक है, इतना स्कोप है, मेरे को लोग पे कर रहे हैं मेरी सर्विस के लिए, तो भी इन्वेस्टर आ जाता है, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो इतने सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स थोड़ी ना आते। हाँ Okay, ma'am. हाँ, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कैसे, क्या इनोवेशन ला रहे हैं, और आप आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, आपके मेंटर्स कौन है या एडवाइजर्स कौन है, और फिर उसके अलावा आपका रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, ठीक है। मतलब अगर इन्वेस्टर अपना पैसा डालेगा तो आप कितने टाइम्स ग्रोथ उसको दिखा पा रहे हैं, Okay, ma'am. ठीक है। ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। आंसर्स अगर आप दे सकेंगे तो पैसे भी मिल जाते हैं। इस समय इंडिया में इन्वेस्टर, बी इट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और बी इट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। Okay. Thank you, ma'am. यू वेलकम। Anyone else up for the questions? Right. So thank you, everyone. I think, at least from my side, I don't know if you people have already done part of these slides or you've already been through entrepreneurial training, right? But I just thought while we are sitting home, and this is also a good time to sit back and also think through our lives, also see what changes we want to bring to ourselves, our communities, and the society. Right? I thought we'll do this session on power of ideas. So thank you, Leena. Thank you, Abhishek. And thank you so much, ma'am. Do you want to, anybody wants to give a closing remarks? Most welcome. Thank you, a lot of you, ma'am. And thanks all of you for participation as well. It was really, really insightful. You know, some knowledge imparted on the path of entrepreneurship. This is a topic which almost every management student look upon. So they might have got good ideas. A lot of queries have been resolved. So it was a great session, and a very big pleasure to be with you always. I hope there are no more queries from the student side. Yeah, there are no more queries. Thank you so much, ma'am. It was really, really nice to have you with us today. It was really nice hearing from you. Right. Thank you so much for having me over. We'll connect later offline. Thank you so much. Bye-bye. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.